Hello student, today we will see third lesson physiography and drainage. Okay, page number 14, physiography and drainage. So dear student, in page number 14, see there is a map of India. Okay, it is a physical map. So okay, there are some questions. By observing the map, you have to solve the following questions. On the page number 15 also there is a map of Brazil, and that is also physical map. Okay, so the first questions on the page number 14 is, in which direction does the region with an altitude of more than 600 meter lie in India? Means which region, कौन सा प्रदेश near about 600 meter उसकी height है. So okay, see there, okay, there are, for that you have to observe the what index. Okay, there are colors 600 meters. So see there, okay, Jammu and Kashmir, okay, that Uttarakhand region, okay, it is a lie. Okay, so means just observing the physical map you have to solve all these questions. Now we'll see the next informations about the India. So in this chapter we have to see the physiography and drainage systems. How is the drainage systems and physiography of India and Brazil? So first of all, we will see the physiography of India. So dear student, physiography of India, the country is divided into 5 major physiographic division. Our India is divided 5 major physiographic division. Now we will see which are they. The first is Himalaya, second is North Indian Plain, third is the Peninsula, okay, fourth is Coastal Plain, and fifth is island groups. Okay, so our Indian physiography is divided into this 5 physiographic division. Now dear students, we will see one by one physiographic division. The first is Himalaya. Which Himalaya? Page number 16. The Himalaya is one of the young-fold mountain in the world. Himalaya is a young-fold mountain. Young-fold mountain means it is made by from the interior movement. Okay, and it is made just like a fold mountain. Okay, young-fold mountain. The Himalaya extend. Now we will see their extension. The Himalaya extends from Pamir Nat in Tajikistan to east. Pamir Nat, Tajikistan से लेके कहाँ तक? East. It is a major mountain system of Asian continent. And it is a major. You can say it is a long mountain range in the world. In India, it extends from. अभी हमको देखना है इंडिया में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है. इन इंडिया इट एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश. वेयर? अरुणाचल प्रदेश दिस स्टेट इज लोकेटेड इन द ईस्ट साइड. ओके, द हिमालय इज नॉट अ सिंगल माउंटेन रेंज. सो हिमालय इज नॉट अ सिंगल माउंटेन रेंज. ओके, इट इज ऑल्सो डिवाइड. सो वी विल सी there are many parallel range in the systems. The southernmost is known as Shivalik. Southernmost, okay, तो हिमालय का जो साउथ साइड है, okay, there is a Shivalik range. Means Himalaya, this Himalayan mountain range is also made by, okay, there are some part. The south side is called as Shivalik range. It is also the youngest range. Next to Shivalik are Lesser Himalaya. Okay. Then the next portion after the Shivalik range, that portion is called as Lesser Himalaya. The next Greater Himalaya. It is the Greater Himalaya is also called as Himandri and Trans Himalayan range from the south to north. Okay, तो south से लेके north तक. Okay, this Himalaya is okay range is consist of this which Shivalik, Lesser Himalaya, Greater Himalaya, okay, and Trans Himalayan range from south to north.
these range are young to old respectively. So okay, this mountain range, okay, is also known as, whole mountain range is known as Himalayan range. The mountain range also divided into Western Himalaya or Kashmir Himalaya, and in another way we will see जो वेस्टर्न हिमालय, जो हिमालय का जो वेस्टर्न साइड है उसको वेस्टर्न हिमालय बोलते हैं हम लोग जनरली, मीन्स इट इज आल्सो लोकेटेड इन कश्मीर साइड, वेयर इट इज कश्मीर साइड, एंड सेंट्रल हिमालय, सेंट्रल हिमालय इज कॉल्ड एज कुमाऊं हिमालय एंड ईस्टर्न हिमालय, और जो पार्ट हिमालय का इस साइड में फैला हुआ है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज आसाम हिमालय. इन दिस वे dear students, we'll see the first geographic division of India, Himalaya. Next portion, North Indian Plain. Which? North Indian Plain. This division lies between Himalaya mountain in the north and peninsula in the south. So ये North Indian Plain ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? Dear students, once again listen carefully. We are seeing the geographic division. Second division, North Indian Plain. So this North Indian Plain, okay, extend from north, means Himalayan mountain north to peninsula south, north से लेके south तक फैला हुआ है. Similarly it extends from Rajasthan and Punjab in the west, और उसके अलावा राजस्थान और पंजाब का जो पार्ट है वहाँ से मतलब वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट में आसाम तक ये नॉर्थ इंडियन प्लेन फैला हुआ है. इट इज मोस्टली अ फ्लैट लो लाइन एरिया, प्लेन, यू नो, हिली एरिया इज ओके, टॉप, एंड प्लेन इज अ फ्लैट. प्लेन कैसा है? फ्लैट. सो वी हैव सीन द नॉर्थ इंडियन प्लेन हैज ओके एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट. It is a low-lying flat area. The North Indian Plain are divided into two parts. This North Indian Plain also divided into two parts. The part lying in the east of the Aravalli is basin of the river Ganga and is therefore known as Ganga Plain. और जो पार्ट इस साइड में फैला हुआ है, इस पार्ट इस साइड, and that plain has become due to the Ganga river basin. जो प्लेन्स एरिया उसको बोलते हैं मैदानी प्रदेश, किसकी वजह से वो मतलब बना हुआ है? गंगा रिवर बेसिन की वजह से. ओके, दैट रिवर, ओके, दैट रिवर मेड द गंगा प्लेन, दैट इज व्हाई दैट प्लेन हैज कॉल्ड एज गंगा प्लेन, एंड इट स्लोप्स ईस्टवर्ड. और उस जो प्लेन्स है, ओके, वो जो प्लेन है, वो जो मैदान है, मैदानी प्रदेश है, उसका स्लोप कहाँ तक है? ईस्टवर्ड, मतलब इस साइड तक उसका स्लोप है. Next, the most of the West Bengal state of India and Bangladesh together constitute the delta of Ganga Brahmaputra systems. It is known as Sundarban. All of you knows the Sundarban. Sundarban is the world largest delta in the world, and this delta, okay, made by Ganga and Brahmaputra river, both river Ganga and Brahmaputra, and this delta, Sundarban delta, is located in the West Bengal. कहाँ पे फैला हुआ है? वेस्ट बंगाल. ओके, सी इन द मैप ऑफ इंडिया. इट इज नोन एज Sundarban. इट इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा. दैट्स व्हाई, ओके, दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन इज ऑक्युपाइड बाय डेजर्ट. और इस नॉर्थ इंडियन प्लेन का जो वेस्टर्न साइड है, मतलब राजस्थान एंड सम पार्ट ऑफ गुजरात, okay, it is occupied by desert. Okay, there is a desert. That whole area is you can say covered by sand dunes. It is also known as Thar desert or Marushali, and that plains is called as Thar desert. अपने इंडिया का जो डेजर्ट है उसको क्या बोलते हैं? थार डेजर्ट. मोस्ट ऑफ द राजस्थान इज occupied by a desert. To the north of the desert lies in the plains of Punjab, and नॉर्थ साइड, ओके, पंजाब से लेके राजस्थान तक ये पूरा एरिया क्या है? वो मतलब पूरा वो डेजर्ट है, मतलब क्या बोलते हैं उसको? रेगिस्तान, रेगिस्तान. ओके, एंड देयर आर मेनी सैंड ड्यून्स, एंड दैट एरिया इज टोटली कवर्ड बाय सैंड.
दिस रीजन इज स्प्रेड टू द वेस्ट ऑफ अरवली एंड दिल्ली रेंज। ये वेस्ट से मतलब अरवली माउंटेन से लेकर दिल्ली तक इस तरह से फैला हुआ है। दिस प्लेन्स हाउ फ्रॉम हैज रिजल्ट द डिपोजिशनल वर्क ऑफ बाय रिवर सतलज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी एंड दिस डेजर्ट, ओके, दिस प्लेन हैज बिकम द सतलज रिवर ड्यू टू द डिपोजिशनल वर्क। डिपोजिशनल मीन्स डिपोजिट मीन्स दैट रिवर, ओके, कैरिड with her some you can say pebbles, sand, some materials, okay, and when that river speed become very low or very less, okay, all this material that river, okay, deposit, okay, on that place. That's why that plain Satluj, okay, due to the Satluj river and its ट्राइब्यूटरीज, और जो उसके जो सब रिवर्स है वो अपने साथ में जो सब मटेरियल लेके आते हैं, ओके, और जहाँ भी उसका स्पीड कम होता है वहीं भी वो पूरे मटेरियल वहाँ पे वो डिपॉजिट करते हैं। द स्लोप ऑफ द पंजाब इज टूवर्ड वेस्ट, और जो पंजाब का जो स्लोप है, ओके, पंजाब का जो प्लेन से जो मैदानी प्रदेश है उसका स्लोप है वो कहाँ तक है, वेस्ट साइड। बिकॉज ऑफ द सॉइल हियर इज वेरी फर्टाइल, एग्रीकल्चर इज लार्ज प्रैक्टिस इन द रीजन एंड दैट्स व्हाई, ओके, ड्यू टू the depositional work of Satluj river and their tributaries, that area has become totally fertile। वो एरिया कैसा हो गया है, फर्टाइल हो गया है, मतलब सुपीक, okay, it is very favorable soil, that soil has become very favorable, okay, very beneficial for the agriculture। That's why in Punjab area, if you will see, okay, they produce a large quantity of different type of crops and their main crop is wheat। So dear students, in this way, in this video we have seen the two physiographic division of India is Himalaya and North Indian plain, okay। In next video we will see the next physiographic division of India, okay। Thank you।